कोशिश करती थी सितार बजाने की, मुझे ऐसी From the Garden State, New Jersey, from one mom to another, it's time for Mom's Talk. Here's Avani. We have with us today a renowned sitar player joining us from Varanasi, welcoming Dr.Supriya Shah. Welcome to the show, Supriya. Namaste, Avni, and a big hello from Varanasi. Thank you so much. Thank you so much for having me on the show. And a big hello to all the viewers as well. आप सितार प्लेयर हैं, ये चीज कैसे हुई? किस तरीके से आपने सितार को अपना बनाया? तो ऐसा मैं मानती हूँ कि मैंने सितार को अपना नहीं बनाया, सितार मेरा अपना ही था, सितार ने मुझे चुना। और मैं ये बात क्यों कह रही हूँ, वो इसलिए कि अक्सर आप देखेंगे कि शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक से जो जुड़े हुए लोग हैं, अधिकतर उनके घरों में वो परंपराएं चली आ रही हैं। So they belong to a family of traditional musicians mostly. पर मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं था. I don't come from a family that family of musicians. तो मेरे परिवार में सब डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेस मैनेजर्स, इस तरह के लोग आपको मिलेंगे। और मेरे पूरे घर में, पूरी फैमिली, पूरे खानदान में शायद इकलौती मैं हूँ जो शास्त्रीय संगीत को और इस तरह से प्रोफेशनली, आई बिकेम अ प्रोफेशनल सितार प्लेयर। तो ऐसी इकलौती मैं ही हूँ। तो ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि शायद इस साज ने मुझे चुना, इस संगीत ने मुझे चुना। और बचपन में स्कूल में एज अ हॉबी क्लास मैंने जो शुरुआत की, तो होते होते आगे इस तरह से योग बनते गए। और ऐसे मेरी माँ ने सबसे पहले मेरे अंदर वो प्रतिभा पहचानी, क्योंकि जब जिद करके मैंने अपने पेरेंट्स से बोल के एक सितार खरीदवाया, आई वाज ओनली 9 years old। और जिद करके, जी, और जिद करके मैंने सितार, एंड आई एम नॉर्मली, आई मीन इवन एज अ चाइल्ड आई वाज नेवर, मतलब मैं जिद करने वाली बच्चा थी नहीं, आई वाज अ वेरी ओबीडियंट गर्ल। तो ये एक चीज है जिसके लिए मैं बिल्कुल अड़ गई कि मुझे आज ही चाहिए। और इत्तेफाक से ऐसी एक जगह थी हमारे घर के पास जहाँ से वो साज हम लेके आ पाए। और फिर अपने आप से मैं कोशिश करती थी, क्योंकि स्कूल में बहुत ही सीमित रूप में, बहुत ही थोड़ी सी जो जिस तरह से स्कूल में होता है, बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि हफ्ते में एक दिन एक हॉबी क्लास, तो उसमें बहुत कुछ विधिवत सीखने को, सिस्टमैटिकली सीखने को नहीं मिला। पर मैं अपने आप से कोशिश करती थी सितार बजाने की। मुझे ऐसी मतलब लगन लगी कि स्कूल के लिए अगर मैं 5 AM पे उठ रही हूँ, तो सबसे पहले उठ के सितार बजाने लगती थी स्कूल के लिए। आपने अपने आप से सितार बजाना पहले शुरू किया? You weren't learning it from शुरुआत में I did get a little bit of familiarity with the instrument from my hobby classes in school, but I didn't really get to learn it formally in a proper systematic manner, the technical aspect or the रागदारी। तो मैं बस अपने आप वो जो हैप्पी बर्थडे और ओम जय जगदीश, इस तरह की जो ट्यून्स थी, उनको खुद ही ट्राई करती थी और मैं उनको निकाल लेती थी थोड़ा थोड़ा, टूटा फूटा। So my mother recognized my talent. My mother felt that even without any training, if I'm able to do this, then I must be formally trained in music. And so that's when she set out to look for a proper guru for me. और फिर मैंने वहाँ से मेरी जो एक फॉर्मल तालीम है, आई वाज वेरी लकी टू हैव सम ऑफ द मोस्ट greatest stalwarts as my gurus. So my training started from Pandit Satish Chandra ji in Kanpur, which is a city in North India. आगे Pandit Shankar Mishra ji, and then lately from Grammy winner Padma Bhushan Pandit Vishwa Mohan Bhatt ji. So I'm continuing my musical journey. Lovely. Yeah. We have a clipping of yours, Supriya, playing sitar. So we'll watch it together. Sure.
Beautifully थैंक played, यू, Supriya. थैंक यू um, सो मच अवनी। एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी सुप्रिया, जब आप बजाते हैं सितार तो जी, आपके मन में और आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? When you're actually playing it, you're playing it so beautifully. What goes in your mind at that particular time while you're playing it? that's a beautiful question, Avni. And although I've appeared for several interviews, nobody ever asked me this question. So I'm really happy that you asked me this question. Uh, क्या चल रहा होता है एक्चुअली जब आप अपने साज के साथ बैठते हैं, व्हेन यू नो सिट डाउन विद योर इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले तो uh, उसका एक पूरा आप अपना उस एक तरह से आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में आते हैं कि आप इट्स लाइक अ प्रेयर एंड यू आल्सो स्टार्ट विद यू नो प्रेइंग टू योर इंस्ट्रूमेंट कि Mm-hmm. मैं आपको हाथ में लेके बजाने वाली हूँ, एंड यू नो विदाउट योर इंस्ट्रूमेंट सपोर्टिंग यू यू रियली कांट प्ले गुड म्यूजिक। तो वो आप अपने आप ही एक उस वाले मोड में आ जाते हैं, विच इज लाइक अ प्रेयर, विच इज अ मेडिटेशन। और Mm-hmm. जब एक बार आप शुरू करते हैं बजाना तो मतलब वन आफ्टर दी अदर मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बॉन्ड बना हुआ है अपने साज के साथ और अपने म्यूजिक के साथ, which takes years and years actually, and it is a result of a lot of things, of course proper systematic training and all of that, and वो सब करते करते और आपका रियाज जो आपने सालों से जो रियाज किया है वो करते करते आप उस स्थिति में आते हैं when you form a sort of an emotional bond with your music and with your Mm-hmm. instrument। और जब आप बजाना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कुछ उस वक़्त सोच रही होती हूँ। इट्स नेवर एनीथिंग कॉन्शियसली डन, आप बस उसमें Mm-hmm. डूबते जाते हैं और कहीं न कहीं वो आपको आप उससे इमोशनली अपने आप को, बिकॉज़ यू आर सो इमोशनली कनेक्टेड टू योर म्यूज़िक, आप एंड इट इज़ आल्सो मीडियम ऑफ योर ओन एक्सप्रेशन। So Mm-hmm. it's a very, I think it's a very emotional state that you're in. So it's not like you're thinking of anything in particular. It's just that Mm-hmm. it's a very you're very prayerful. I mean, you're praying and or you're meditative or you're in an emotional state of mind, and that comes out through your music. So Mm-hmm. Mm-hmm. it's yeah. So you're basically expressing yourself through music, and it's very meditative. It's also sometimes very emotional. So I think that's what I experience most of the time when I'm playing my music. आपने जी, इंटरनेशनली भी शोज किए हैं सुप्रिया, जी, इतनी जी, प्रेस्टिजियस जगहों पर आपने परफॉर्म किया है। yeah. um, ये जो करियर आपका इसमें रहा वो किस तरीके का रहा? Was it I know nothing is easy, but how was it for you to get to this level? See, to do anything well in life, it takes a lot. So, irrespective of what you're following, what you're pursuing in your life, if you have to do it well, then you should be prepared to work hard and be prepared for the struggle. So, I think we all go through that. तो वही मेरे साथ भी हुआ, थोड़ा सा और मुश्किल तब हो जाता है for two reasons. One, I feel to an extent, if you are a woman in this kind of a field, तो थोड़ा सा आपके कुछ दायरे होते हैं जिनके अंदर ही आपको रहना है, Mm-hmm. which I think जो मेन फोक हैं या जो मेल म्यूजिशियंस या आर्टिस्ट हैं उनके लिए थोड़ा सा वो फ्रीडम या जो दायरा है वो थोड़ा और बड़ा होता है, बट फॉर विमेन Mm-hmm. आई थिंक वो दायरे थोड़े से सीमित हो जाते हैं, और स्पेशली क्योंकि हम लोग की बहुत से रोल्स होते हैं, वी आर एंड वी वांट टू आल्सो, आई मीन इट्स नॉट समथिंग दैट इज इम्पोज्ड ऑन अस, बट वी वुड आल्सो आवरसेल्व्स लाइक टू टेक केयर ऑफ फैमिली, टेक केयर ऑफ आवर चिल्ड्रन एंड Mm-hmm. motherhood responsibilities and things like that। तो वो सब तो it's part and parcel of life। तो थोड़ा सा वहाँ उसको लेके and plus even when you go out in the field and you have your own, I mean आपकी एक dignified तरीके से अगर आपको अपने काम को आगे बढ़ाना है, Mm-hmm. और अपनी आपकी कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करते हुए आपको आगे बढ़ना है, you don't want to compromise on certain things, then it may take a little longer, it may require a little more effort, but in the end आप जरूर आपको जो आपकी जगह है वो आप बना पाते हैं। बिल्कुल वो जगह बनती है, शायद उसमें समय थोड़ा सा ज्यादा लगता है, पर फिर Mm-hmm. जो जगह बनती है आपकी,
वो बहुत लंबे समय तक फिर आप टिकने वाली जगह बनाते हैं, एंड यू ऑल्सो अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ द Yeah. पीपल। या यू ऑल्सो अर्न द रिस्पेक्ट ऑफ पीपल। और दूसरा जो मैं कह रही थी, एक तो बीइंग अ वुमन कुछ चीजें होती हैं जिनका आप ध्यान रखते हैं, और दूसरा बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, तो उसको लेके जरूर इट बिकम्स क्वाइट चैलेंजिंग समटाइम्स, बिकॉज वे Mhm. ऑब्वियसली व्हेन यू हैव ग्रोन अप, पहले तो सीखने का जो टाइम होता है उसमें भी, बिकॉज इफ यू आर born in that atmosphere and you are Mhm. growing up in that atmosphere, then you imbibe things very naturally. But if you have the support of your family but not the atmosphere at home, then you have to struggle a lot in the learning process also. और दूसरा, जब आप अपना करियर बनाने निकलते हैं, तो आप you're on your own, because Yes. you don't have the you don't know anybody, nobody knows you to start That's with, true. and you don't have anybody, no godfathers or no parents who are also famous musicians. तो ये सारी चीजें हैं, पर ठीक है, वो धीरे धीरे आप उन चीजों को भी अपने एफर्ट से ओवरकम करते हैं, और धीरे धीरे आप कर पाते हैं जो आपको करना है। यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, you just have Yeah. to keep at it. Yeah. You think patience is the key here? Oh yes, oh yes. That music is really is a test of your patience, because आपको सीखने के दौरान, और in fact I think every musician will agree with me when I say that you are a student of music all your life. No matter Uh-huh. what you attain, musically, what great height you attain, the greatest maestros will also always say that we are still learning, because ये इतनी गहराई है इसमें, आप डूबते जाइए और आप उसमें आप कुछ नया रोज खोजते रहिए, और रोज आप, तो वो चीजें होती है म्यूजिक करते करते, आपको बहुत पेशेंस चाहिए, क्योंकि जब आप इस Mhm. लेवल पे आएंगे तो देयर सो मच मोर दैट इट विल गिव टू यू, व्हिच यू नाउ हैव टू डू एंड परफेक्ट. So definitely, yes, it teaches a lot of patience, and it teaches a lot of groundedness. And you have to be, Absolutely. yeah, and also humility. It also Mhm. teaches you humility. Yeah. सुप्रिया, आप ने बताया you're a mother, और जी. जैसे आप you just mentioned that that is one of the things that you want to be with your family, you want to be with your child, and you also have to be equally dedicated towards your career, and especially Yeah. when, जैसे आपने बताया ना, ये एक प्रेयर है जब आप सितार बजाते हैं, तो एक जी. there is a level of dedication that goes into your profession as well. तो ये दोनों चीजें जब आपको बैलेंस करनी पड़ती हैं तो वो इतना आसान नहीं होता है। नहीं. आपके केस में आपने उस चीज को किस तरीके से बैलेंस किया, किस तरीके से आप अपने with your child, how did you do that, how did you manage all these things so well? Yeah, so Avni, one has to prioritize everything in life. तो मैंने वही किया, वही कोशिश की। तो जब मेरी बेटी हुई, व्हेन आई हैड माय डॉटर, तो मुझे ये बिल्कुल मैं इस बात को लेके क्लियर थी, एंड कि मेरे को मतलब मेरी बेटी के, मैं तो सब चीजें, मेरे बहुत सारे रोल्स है, मेरा करियर है, सब कुछ है, बट मेरी बच्चे के लिए तो सिर्फ मैं हूँ। तो Uh-huh. आई शी वाज ऑफ कोर्स माय नंबर वन प्रायोरिटी। जब, और अब तो खैर शी इज नाउ अ टीनेजर, शी इज 14 प्लस Okay. नाउ, सो शी इज या, बट ये है कि my daughter also, I mean, I could do so many things because I had the support of my daughter, because I feel जो इस तरह की, and I'm a single mom, so Mm-hmm. इस तरह की जो बच्चे होते हैं, I think they are also, they are very sensitive and sensible, mature, and also very independent. तो वो चीजें शुरू से, मतलब हम दोनों की आपस में जो, ऑफ कोर्स वी शेयर सच अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एंड आई ट्राई टू बी देयर फॉर हर, मतलब बिकॉज शी वाज एवरीथिंग फॉर मी, माय नंबर वन प्रायोरिटी। और जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो ऑफ कोर्स उनके लिए माँ ही सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होती है, who Mm-hmm. we are supposed to nurture our children, we are supposed to take care of them, and वो जो एक लव, और वो होता है, वो भी सबसे ज्यादा बच्चा माँ से ही एक्सपेक्ट करता है, लव एंड केयर। तो कुछ समय ऐसा बीता जब मैंने केवल अपनी मदरहुड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। ऑफ कोर्स आई वाज ऑलवेज वर्किंग ऑल्सो,
I was also, because I'm attached to the university also, I teach at the university here in Varanasi, Banaras Hindu University. तो मेरा वो काम तो साथ में अब चल ही रहा था, बट जो मेरे एज अ प्रोफेशनल सितार प्लेयर, लाइक अ कॉन्सर्ट आर्टिस्ट, वो कुछ समय के लिए मैंने उन चीजों के बारे में सोचना बंद किया. आई हैड टू बी देयर विद माय डॉटर, आई हैड टू बी देयर फॉर माय डॉटर. तो इसलिए मैंने कुछ साल ऐसे भी बीते व्हेन शी वाज स्मॉल, जब मैंने इतना ज्यादा एक्टिवली आई वाज नॉट परफॉर्मिंग. But now that she's grown up, she's reasonably independent, and she's able to take care of herself. तो अब मेरे को, and she's able to study on her own and things like that. तो अब मेरे पास of course अब और टाइम है कि मैं वापस से अपना जो मेरे जो कॉन्सर्ट्स हैं या मैं जो प्रोफेशनली एज अ सितार प्लेयर मैं अपने आप को आगे बढ़ाऊं. तो ये सारी चीजें आपको, आई मीन यू रियली डोंट प्लान ऑल दिस, इट जस्ट हैपेंस ऑन इट्स ओन, बिकॉज यू हैव, when you have all these responsibilities to take care of, you're not really thinking of anything. You're just doing your bit. You're doing your bit, and you get the strength and the direction, to do it. आप उस वक्त ये नहीं सोचते हो कि ओ ये नहीं कर पा रही या वो नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज क्लियर है कि अच्छा मुझे अब यही करना है. तो यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड, एंड it just happens. It happens. I mean, it's all good because that's part of your journey, and that's what makes you who you are today. So women should always remember, ऐसा भी होता है कि कुछ कभी कभी women have to give up their career, या कुछ समय के लिए break लेना पड़ता है, and they feel very frustrated. I'm saying this to women who are younger or even in the same age group as mine. See, this is all part of the journey, and I think it has enriched me immensely, and it has its own rewards. And I want to tell everyone that everything happens in its own good time. So we must have no regrets, and we must be grateful for our journey. We must be grateful for all the different roles we play, because all those different roles give us the experiences in life to, and those experiences are, good and bad both, but they make you who you are. They shape you into the person you're meant to become. So I think we should be grateful for everything. And there's everything has a timing, everything happens in its own good time. So whatever you deserve shall definitely come to you. That's what I would like to tell all women out there. Lovely, lovely, Supriya. आपने बताया you've been a single mother. Now that again, puts the difficulty level a little bit higher, because now you're doing everything, you're managing everything single-handedly. And here there are no compromises, when it comes to raising a child. ऐसा नहीं है कि अरे ये काम खराब हो गया तो हम ऐसे फिर से कर देंगे. ये चांस इन चीजों में नहीं लिया जा सकता. ना किस तरीके से इमोशनली काफी चीजें होती हैं, physically sometimes you get tired because you are the one who's doing everything. Where did you gain that strength from? How did you do it? Frankly, Avni, when I look back, I'm amazed at myself as to how I did it, especially when my daughter was very little. Now, I mean, of course, it's much easier now because she's almost grown up now. She's into her teens. पर जैसा मैंने कहा कि उस वक्त आप कुछ सोच नहीं रहे होते उस वक्त. और मैंने कभी इसको, जब आप किसी परिस्थिति में होते हैं, you're in a set of circumstances, I think you don't really apply your mind to it. You just know that you're in those circumstances and you are just doing your bit. आप अपना जो एक के बाद एक जो आपको करना है, आप वो कर रहे होते हैं. So there's no time to feel sorry about yourself. And frankly, I don't feel there's anything to feel sorry about. Like I said, everything is, it's your perspective. आप किस तरह से अपनी, how you approach life, how you approach the circumstances you're in. मतलब आपका क्या, उनको response क्या है आपका, या आप किस perspective से उनको देख रहे हैं, अपने साथ हो रही चीजों को. That makes all the difference. I really feel that's what makes all the difference. So if you think something is difficult, then it will become difficult for you. So it is up to you how much you magnify your trials or tribulations, or it's up to you to look at them as just passing phases, and
something that is making you stronger and wiser. तो आपका बस पर्सपेक्टिव बदल जाता है, तो आप की हर चीज आसान हो जाती है। ऐसा मुझे लगता है कि इतना मतलब केवल अपने एटीट्यूड को बदल देने से आई थिंक चीजें आप बहुत जितना आसान हो सकती है। आसानी से सितार बजाते हैं उतना ही आसानी से आपने इस जी बात को समझाया है, बताया है। It's जी lovely what you have said. It's really truly up to us. Perspective is what you spoke about. या And you've said it so easily. But I guess maybe, looking ahead, looking forward, not getting stuck in that situation, not blaming us for anything is, I या think that या that and helps. yeah, and I'd like to say one thing. I mean, not to sound like, because I think there are a lot of ladies out there who might have been in similar situations, and I'm sure it can be quite difficult. It can be quite challenging sometimes. It can be a struggle. तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऐसे moments नहीं आए जब मैं थकती नहीं थी, when I used to not feel tired, or perhaps I did not feel कि अरे कोई तो है, कोई हो जो ये सारी चीजें मेरे साथ संभाल ले, it's not like that, कि मेरा ऐसे phases नहीं आए। पर I think बहुत जैसा कि एक तो जब आप, जैसा मैंने कहा कि उन चीजों में से आप निकलते जाते हैं, आप you're doing your bit and those things are just passing on, and you're going, passing out of those phases, moving out of those phases. And more importantly, like I said, my daughter was, having my daughter has given me a lot of strength. So yeah, and because my daughter was there with me, and because she has been herself from the beginning, a very understanding, sweet girl, not demanding at all, and supportive in her own way, a very sensitive girl. I think that has helped me so much, because that made things a lot easier for me to handle. If I had a child who was, who was more demanding emotionally, I mean, she is a very loving, affectionate child, but she understands, I think children do understand, the situation that is there, and they sort of have a better ability than adults to adjust to, whatever is going on, and they adjust beautifully. Supriya, आप जो भी आपने बताया, जो भी आपने शेयर किया, I think there's a lot of learning for all of us through your life journey, whether it's personal or professional. Real quick, I also wanted to know, and we all viewers would like to know your message for all the mothers. So I would just like to say that we are really blessed that we are mothers. I think that's the biggest blessing, and also ये हमारा बहुत बड़ा privilege है कि you know we give birth. I mean हम we are basically हमारी वजह से life continues, right? We give birth to children, and फिर हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उन्हें nurture करते हैं, किस तरह से उन्हें how we raise our children. And through by doing that, by through our parenting as mothers, हम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, इस पूरी दुनिया में, क्योंकि हमने जो उनको सिखाया है या जो हमने उन्हें बनाया है, उसकी वजह से वो सोसाइटी में अपनी तरीके से कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और उसकी वजह से एक्चुअली वी आर द वंस हु आर we have the privilege of in our own way इस दुनिया को बनाने में हमारा कितना बड़ा रोल है as mothers. तो motherhood जो है, I'm sure all mothers would agree कि it's the most rewarding, also the most challenging role for a woman. It can get very tricky, and things, it's like you learn a lot of things as you with each passing day, or जैसे जैसे समय बीतता है आप और सीखते हैं, बिकॉज वी डोंट कम विद एनी बुक ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जिसमें कि आपको बिल्कुल मालूम हो कि ऐसे ही एज अ मदर या ऐसे ही आपकी लाइफ बीतेगी और ऐसे ही आपका बच्चा जो है वो करेगा। तो बहुत सी चीजें हम सीखते हैं धीरे धीरे टू हाउ टू बी गुड मदर्स। तो बट सबसे मुश्किल भी है, लेकिन सबसे ज्यादा सबसे सुंदर और सबसे रिवॉर्डिंग रोल है आई थिंक, मेरे हिसाब से। मेरे सारे जो इतनी सारी चीजें मैं करती हूँ उसमें सबसे रिवॉर्डिंग रोल मेरा एज अ मदर रहा है।
So I think just live each moment and treasure it. Treasure each moment you have with your children. That's all I have to say to all mothers. You're Beautifully all said, blessed. Supriya. You're all blessed to be mothers. Absolutely, absolutely. Lovely, lovely talking to you, Supriya. Same here, Avni. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ जानने भी मिला. So thank you so much for Thank you, sharing Avni. your journey with all of us. Thank you so much for coming on the show. Thank you again for having me on the show.